Good morning, students. Welcome to Fluid Mechanics video lecture. Okay, we'll start with one more new topic, that is drag on sphere. See, you already know what is drag, what is lift, all those things. Now we are going to play with this within what, like if there is a sphere, if there is a plate, or if any other airfoil, लाइक अगर ये ऑब्जेक्ट्स है देन ड्रैग कैसे बिहेव करेगा, कैसे जनरेट होगा, तो वो हम आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो लेट्स सी हाउ ड्रैग इज गोइंग टू वेरी when it comes to sphere. Okay, in this one we are going to take two cases. Clear? So one is we are going to consider ideal fluid. Take a second. Okay, so we are going to consider ideal fluid and real fluid. So before I start, I just inform you like what is ideal fluid. Ideal fluid is viscosity is zero. There is no viscosity. एक simple याद रखो. ठीक है. Real fluid means it's real. Obviously हर एक fluid में there will be some viscosity. See, practically speaking, there is no ideal fluid exists. ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं है लाइक इट इज एन आइडियल फ्लूइड बिकॉज नो विस्कोसिटी, नो चांस. ठीक है. हर एक फ्लूइड में अलग अलग तरह का अलग अलग लेवल पे विस्कोसिटी रहता है. ठीक है. वाटर में भी विस्कोसिटी रहता है. ठीक है. बट वी नाउ फॉर डिस्कशन विल सी व्हाट इफ we'll going to consider ideal fluid, and in that fluid your sphere is immersed, or ideal fluid is flowing and your sphere is immersed in that fluid. ठीक है. Okay, it is possible to obtain analytically the pressure distribution around the sphere. So the word comes analytically, so that means practically, experimentally you can't get the pressure distribution because there is no term called as ideal fluid. There is no fluid which is having zero viscosity. Okay, that's why whatever we are going to talk, it is only analytically. Okay. See, in this case, due to absence of viscosity of flowing fluid, the flow pattern and the pressure distribution is symmetrical on the upstream side and downstream side of the sphere. Okay, to understand all these things, we are going to consider a diagram. Okay. So you can see this is one sphere rakha hua idhar, and it is immersed in the fluid which is flowing like this. The fluid is flowing like this. ठीक है. इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है like that. ठीक है. एक सेकेंड यार. ओके. ठीक है. ऐसा फ्लो हो रहा है. क्लियर है. सो बेसिकली क्या होता है, विस्कोसिटी नहीं है. आइडियल फ्लूइड लिया ना, विस्कोसिटी नहीं है. आप लोग ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझा है. ठीक है. what he is telling is in this ideal fluid case liya na, so the flow pattern and the pressure distribution is symmetrical on both upstream and downstream side. So that means समझो आप इस entire diagram को like if I cut like this vertically मैंने दो पार्ट किया. ठीक है. so this portion is called as क्या बोलते हैं, upstream side है this portion, right, and this is downstream side है. This is upstream side and this is downstream side. So whatever the flow pattern is there upstream side में वही similar downstream side में रहेगा, and whatever the pressure distribution is there in the upstream side, the same thing it will be in the downstream side. ठीक है. because there is no disturbance for the flow. See, normally क्या होता है, एक सेकेंड. ओके. see normally क्या होता है, समझो आप फ्लूइड अगर विस्कोसिटी है तो वो ऐसा
और फ्लो करके आता है. एक सेकेंड, आई जस्ट नीड समथिंग. ओके, लेट्स सी. समझो ऐसा फ्लो करके आ रहा है और इधर रुका. विस्कोसिटी है तो वो एक बाउंड्री लेयर क्रिएट होता है. करेक्ट है, विस्कोसिटी है तो बाउंड्री लेयर क्रिएट हो जाता है और ऐसा फ्लो होता है. तो सिंस इट इज हैविंग ए विस्कोसिटी, देयर इज अ बाउंड्री लेयर इज क्रिएटेड. अभी समझो देयर इज सेकंड लेयर, इसके बाजू में जो सेकंड लेयर था वो, आई विल डू वन थिंग, आई विल जस्ट चेंज द कलर सो दैट यू विल गेट, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज. ओके. सो अभी जो उसके बाजू में जो लेयर था, तो वो भी ऐसे उसके साथ आएगा और वो भी ऐसे फ्लो होके जाएगा. अभी क्या होता है, जो विस्कोसिटी की वजह से जो ब्लू कलर लेयर है ना, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है रेड लेयर के ऊपर. ठीक है. सो देर इज ए इफेक्ट ऑन इट्स फ्लो. वेलोसिटी चेंज होता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है. करेक्ट है. तो सिमिलरली दिस पिंक लेयर, इट इज गोइंग टू कॉज सम रेजिस्टेंस टू दिस, समझो येलो लेयर. तो सिमिलर वे इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, बाउंड्री लेयर का जब हमने डिस्कस किया था, ठीक है, सब कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हूँ. ठीक है. सो if you are talking about real fluid, this is the scenario. But unfortunately, we are talking about the your real ideal fluid. So there is no any viscosity. So that's why whatever the pressure distribution is there, whatever the your flow pattern is there, both upstream side and downstream side, it will be similar. It will be symmetrical. And not only that one, even if you take और इफ यू डू लैटरली, अगर इसको हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड किया ना, तो अब अबोव दिस पर्टिकुलर लाइन आल्सो इट विल बी लाइक सिमिलर टू दैट ऑफ डाउन साइड वाला. ठीक है. सो वट एवर दिस पोजिशन, वट एवर दिस फ्लो पैटर्न इज देयर, सिमिलर टू दिस वन आल्सो हियर इज देयर. ठीक है. सो बोथ, ये दोनों सेम रहेगा. ठीक है. सो let's concentrate. See, you can see this since क्या होता है, इधर जो वेलोसिटी जो एरिया है वो इधर डिक्रीज हो गया, तो इधर ज़्यादा एरिया था. करेक्ट है. सो आई चेंज दिस वन, स्पॉटलाइट लेता हूँ. सो यू कैन सी इधर एरिया ज़्यादा था, जाते जाते जैसे स्पीयर इधर आ गया तो उसका एरिया कम हो गया. करेक्ट है. विड्थ कम हो गया तो पानी का जो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा इधर. सिंस द वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इज गोइंग टू क्रिएटेड. This is nothing but a CD value. ठीक है, coefficient of drag. So this is, it goes in negative. Similarly this side भी ऐसे ही हो जाएगा, and whatever the pressure here it is there, it will be same as downstream side. ठीक है. So this is that's why both these values are same, and this value is also same. Clear? Okay. See, the highest intensity of the pressure occurs at the front and the rear stagnation points. So that means, समझो अगर आपका ये फ्लो जा रहा है, ठीक है, सो इफ दिस इज द फ्लो ऐसा जा रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट है, फ्रंट स्टैग्नेशन पॉइंट एंड रेयर स्टैग्नेशन पॉइंट. ठीक है. व्हाट इज स्टैग्नेशन पॉइंट, और वेयर वेलोसिटी विल बी आइदर जीरो or the velocity of the flow will be equal to the velocity of the object. Right now if you are taking this object is rest पे है, तो your velocity of the flow also it's zero बन जाएगा. ठीक है. So okay, so what is telling is the highest intensity of the pressure occurs at the front and the rear stagnation point, that is this point and this point. ठीक है. The lowest intensity of the pressure occurs around the circumference at right angles to the flow. So this is lowest intensity of pressure, this one. So that's why I told why it happens is, since the area or width is reduced, the velocity increases and the pressure reduces. So that's why the pressure is reduced. Intensity of pressure is going to get lowest at these points, 90 degree to the circumferential के लिए, ये point पे और ये point. ठीक है. If this pressure is integrated over the entire surface of the sphere and its component in the motion is obtained, then it will be equal to zero on the account of symmetrical pressure distribution. So what is trying to tell is, जितना इधर है pressure, same इतना भी opposite में रहेगा.
So similar here also same, here also same रहेगा. So that means if you take integrate entire pressure distribution, intensity of pressure, so it will become a zero, the account of symmetrical pressure distribution. So that's why there is no drag at all, because entire pressure distribution will be same. See, drag कब create होता है when there is a difference in pressure distribution. करेक्ट है. सो नॉर्मली अगर आप रियल फ्लूइड लिया तो इधर ज़्यादा प्रेशर रहेगा, इधर कम प्रेशर रहेगा, वेग क्रिएट होता है. सो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द ड्रैग विल बी जनरेटेड. ऐसा हमने डिस्कस किया था. करेक्ट है. सिंस हियर इट इज सिमेट्रिकल, सो द टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दिस वैल्यूज विल गिव द सिनेरियो इज जीरो है. सो देयर विल बी नो ड्रैग फोर्स. दैट मीन्स नो ड्रैग. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. ठीक है. So since there is no viscosity, there is neither deformation drag or friction drag. कुछ भी नहीं है, viscosity ही नहीं है. तो अभी देखो, we already discussed what is deformation drag and friction drag and all these things. See, deformation drag, friction drag, all these things. friction drag बोले तो कैसा है, अगर fluid इसको चिपक के ऐसा रहा तो वो because of that friction viscosity नहीं है तो friction ही नहीं है. विस्कोसिटी नहीं है तो आपका डिफॉर्मेशन भी नहीं होने वाला है. दैट मीन्स एक लेयर दूसरे लेयर को डिफॉर्म करेगा या स्पीयर को डिफॉर्म करेगा, कुछ भी नहीं. सो नो विस्कोसिटी, दैट मीन्स इन आइडियल फ्लूइड नो ड्रैग, no deformation drag, no friction drag, nothing. Hence, in case of ideal fluid flowing past a sphere or any other object, there is no drag. So simple case hai. If you are considering what I can say ideal fluid, ठीक है, so there is no drag. If you are considering ideal fluid and you take any object, whether it is a sphere, whether it is a rectangle, plate, कुछ भी ले लो, so obviously there will be no drag force. ठीक है. So this is the basic concept. Okay, we'll move on to next thing. अभी तक इधर तो clear. So now we are going to take real fluid. ठीक है. So that means when real fluid flowing past a sphere. So same diagram रहेगा. Since only thing is the characteristics of this fluid is there, no? It is now we are changing from ideal fluid to real fluid. So once if we are talking real fluid means it has viscosity. Obviously the viscosity keeps on changing, the scenario keeps on changing. Okay. See, in this case, the resulting pressure distribution is entirely different from that obtained analytically for the case of an ideal fluid. Obviously, it is different than the first case. Okay. Such modification in the pressure distribution is evidently due to the viscosity possessed by the real fluid. So, what is the main difference between ideal fluid and real fluid means? In ideal fluid, there was no viscosity, so that was zero pressure distribution tha. The zero drag tha. So here viscosity is present, the pressure distribution is going to change, or boundary layer is going to form. Because of that one pressure distribution change होगा, तो drag force generate होगा. ठीक है. Okay, let's consider d be the diameter of the sphere. ठीक है. And v or capital U or v, okay, be the velocity of the flow of fluid. Rho is the mass density of the fluid, and mu is the viscosity of the fluid. These are the terms you already know. So if the velocity of the flow is very small, हर एक point बहुत important है. If the velocity of the flow is very small or the fluid is quite viscous such that Reynolds number, that is rho Vd or rho Ud by mu, is very small, as low as 0.2 or even less. See, if the velocity of the flow is very small, that means it is quite viscous material है और viscous fluid है. Velocity कम है तो मतलब viscosity ज़्यादा रहेगा, resistant to flow ज़्यादा रहेगा, इसलिए उसका velocity कम रहेगा. So that means अगर viscosity ज़्यादा है बोले तो उसका Reynolds number कम रहेगा. ठीक है. एवरीथिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, फंडामेंटल्स है, तो आपको पता रहना चाहिए. इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस, दैट मींस इट इज अ विस्कस मटेरियल. सो एज लो एज 0.2 और इवन लेस, याद रखो. ठीक है. सी, देन द विस्कस फोर्स आर मच मोर प्रिडोमिनेंट देन द इनर्शिया फोर्स.
So obviously when it comes to the material is more viscous, so whatever the viscous forces are generating, that is those will be a predominant when it in than the inertia forces or resisting forces से ज़्यादा viscous forces रहेगा. So for the flow of real fluid of an infinite extent, so there is no any boundary condition. Like if it is a infinite flow है and the fluid is real fluid के बारे में बात कर रहा हूँ, and obviously it is going to pass through the sphere at such low Reynolds number. C.G. Stokes is a scientist, developed a mathematical solution in which the inertia forces were assumed negligible as compared with the viscous forces. See, what he's trying to tell is, what C.G. Stokes has done is he has done the experimentally, he has done the work. In that case, what he has done is he has taken the real fluid, he has taken the sphere. That means the sphere is placed in the uh, real fluid, which is flowing with a velocity some u. Okay, and since it is having Reynolds number of like viscous material था, तो negligible inertia forces था, predominant viscous forces था, ठीक है, compared with the viscous forces. तो ऐसा उसने mathematical solution निकाला, ठीक है. Then he has done all the studies, experimental studies किया है. Once again मैं बता रहा हूँ, C.G. Stokes what he has done is he has taken the real fluid, ठीक है, which is having a viscosity property, which had a viscous fluid था. So inertia forces are very negligible था, or he has assumed it as a negligible. So he has considered only viscous forces, and he has done the lot of experiments, and he has given some mathematical equations. So according to this analysis, the total drag is, so he has given the equation for total drag force, that is Fd is equal to 3 pi mu Vd, or Vd or Ud. Wherever I am going to write V or V, you can consider U also, because previous in some notes, like I had taken U. Okay? So Fd is equal to 3 pi mu Vd or Ud, out of which, so whatever the drag force is there, out of this, whatever this value may be, okay, out of which 2/3 is contributed by skin friction and 1/3 is contributed by the pressure difference. ठीक है. So you know already drag force के अंदर pressure difference की वजह से होता है, skin friction से भी होता है. So whatever the total drag force is there, in that one 2/3 is because of skin friction and 1/3 is because of pressure difference. ठीक है. So let's consider the skin friction. So you know skin friction drag, that is F df ऐसा लिखा हूँ, is equal to 2/3 of Fd, because it is a 2/3 of total drag force. And you know Fd is 3 pi mu Vd. So I written here 2/3, 3 pi mu Vd. So if you do cancellation, 3 cancel हो गया. So you'll get drag force because of friction is equal to 2 pi mu Vd. So this is one equation. ठीक है. Next we will go for, this is 2/3 force, 2/3 of the drag force, that is frictional force. Now if you take pressure drag due to the deformation, so that is 1/3 of the drag force, total drag force, that is 1/3 of drag force. This is what he got. ठीक है. So once he has done the analysis, total drag में उसने फाइंड आउट किया कि स्किन फ्रिक्शन से कितना हो रहा है और प्रेशर ड्रैग से कितना हो रहा है. सो स्किन फ्रिक्शन से 2/3 पार्ट था, और इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन और डिफॉर्मेशन की वजह से 1/3 था. सो 1/3 ऑफ द टोटल ड्रैग. So 1/3 into, you know, Fd is equal to 3 pi mu Vd. So once again, your drag force because of the pressure is pi mu Vd. So because of friction is 2 pi mu Vd. Because of deformation or pressure drag, it is pi mu Vd. Okay? So we know that Fd is equal to Cd into A rho u square by 2. So this is basic formula, you know. Total drag force is also equal to Cd into A rho u square by 2. See here I am taken u. So this is u, or this v is same. Okay, it's a velocity of the fluid or velocity of consideration, correct. So now Fd is equal to Cd into A into rho u square by 2. If I'm taking Cd is equal to Fd by, so if I'm taking Cd is equal to Fd, A इस तरफ आ जाएगा, Fd by A into
1/2 रो यू स्क्वायर, ठीक है। सो फॉर स्पीयर you know fd is equal to 3 pi mu vd, you substitute that value in this location, and you know a is equal to sphere है pi d square by 4, so you substitute fd value for sphere, it is 3 pi mu vd, and projected area is pi d square by 4 for sphere. So I just substituted fd value and a value in this equation. Here it is, cd is equal to 3 pi mu vd divided by pi d square by 4 divided by half into rho u square. So I done the calculation, cd is equal to 3 pi mu vd pi d square by 4 में नीचे लेके आया half into rho u square. If you do the calculation, all the cancellation, pi cancel किया, इधर एक d cancel किया, correct है, इधर u इधर एक u cancel किया, तो ultimately you are going to get 24 mu divided by rho ud, ठीक है, and that is cd is equal to 24 mu rho u divided by rho ud, and you know rho ud divided by mu is nothing but Reynolds number Re. So that means rho ud divided by mu is nothing but Reynolds number. So cd is equal to 24 divided by Re. So this is the final formula, cd is equal to 24 divided by Re, and this is called as Stokes law, ठीक है. Stokes law, that is coefficient of drag is equal to 24 divided by R suffix E, or 24 divided by Reynolds number, ठीक है. So the above equation is generally designated as Stokes law. Clear है? Okay, remember very important point, use above equation, that is this one, cd is equal to 24 divided by Re, or fd is equal to 3 pi mu ud, or this equation, ये वाला fd is equal to 3 pi mu vd or ud, ठीक है. Both referred as Stokes law only when Reynolds number is less than or equal to 0.2. So that means जब भी प्रॉब्लम में Reynolds number is less than or equal to 0.2 दिया है, then only you go with these two formulas, fd is equal to 3 pi mu ud or cd is equal to 24 divided by Re. Otherwise use basic equation of drag. This is the basic equation, आपने पहले से भी इक्वेशन प्रॉब्लम सॉल्व किया है. सो नॉर्मल प्रॉब्लम में आप लोग क्या ले रहे थे, ड्रैग फोर्स के लिए फार्मूला एफ डी इज इक्वल टू सी डी इंटू ए इंटू रो यू स्क्वायर बाई 2 ले रहे थे. सिंपली वो लेते रहने का. अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर क्वेश्चन में दिया है, आपका रेनॉल्ड्स नंबर इज 0.2 0.15 ऐसा दिया है, लेस देन और इक्वल टू 0.2 है, सो देन ओनली यू शुड गो फॉर दीज टू फॉर्मूलाज व्हिच आर कॉल्ड एज स्टोक्स लॉ. सो दैट मीन्स स्टोक्स लॉ मतलब रेनॉल्ड्स नंबर रहना चाहिए. अगर रेनॉल्ड्स नंबर नहीं है तो स्टोक्स लॉ अप्लाई नहीं होता, ठीक है. ओके, सो इन केस ऑफ रियल फ्लूइड देयर विल बी ए डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर नियर द सॉलिड बाउंड्री विच विल अफेक्ट द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्फीयर. दिस थिंग्स ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया. अगर क्या बोलते हैं रियल फ्लूइड में, अगर आपने फर्स्ट पेज पे गए तो वो डायग्राम पे गए तो ऑब्वियसली देयर विल बी एक बाउंड्री लेयर क्रिएट होता है, चिपक जाता है, एक लेयर ऑब्जेक्ट के ऊपर चिपक जाता है और वो लेयर दूसरे लेयर के ऊपर रेजिस्ट करता है और दूसरा लेयर थर्ड लेयर के ऊपर रेजिस्ट करता है. ये बाउंड्री लेयर बोल के हमने ऑलरेडी सीखा था. ओके, so which will affect the pressure distribution on the sphere obviously. So if we increase the velocity of the flow, ठीक है, that is you are increasing by keeping other properties constant. So matlab that means what you are going to do is you are going to increase the velocity of the flow but remaining all properties of the fluid you are going to keep it constant, whether it is a viscosity रहने दो, density रहने दो, सब constant रखते हो, but you are going to increase the velocity of the flow, ठीक है. Then boundary layer will be converted from laminar to turbulent. So if you just increase the velocity by keeping all other properties of the fluid constant, then the flow will convert from laminar to turbulent, or the boundary layer will be converted from laminar to turbulent. You know laminar flow ka turbulent. So therefore Reynolds number will plays an important role in case of real fluids past a sphere. So that means obviously when you are talking about real fluids,
ठीक है, रियल फ्लूइड्स. सो रेनॉल्ड्स नंबर प्लेस एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है. So we use different Reynolds number limits to define drag on the sphere. So that means by keep on changing the Reynolds number, so you can क्या बोलते हैं, ड्रैग ऑन स्पीयर के लिए हम अलग अलग इक्वेशंस यूज कर सकते हैं. जैसे कि आपने अभी जस्ट स्टोक्स लॉ देखा, फॉर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन और इक्वल टू 0.2 था, करेक्ट है, आपको सी डी इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई आर ही मिला था. वही अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर इज लाइंग बिटवीन 0.2 एंड 5, दोनों के बीच में 0.2 से 5 के बीच में है, तो आपका इक्वेशन बन जाता है सी डी इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई आर ई इंटू 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 16 आर ई. ठीक है. सो दैट मीन्स दिस इज ओसिन बोल के एक साइंटिस्ट था. सी व्हाट ही हैज डन इज ही हैज डन सम एक्सपेरिमेंट्स and he has considered both क्या viscous properties and also the one which is neglected by the Stokes law. Stokes law उसने neglect किया था inertial forces, तो उसने partly even inertia forces को भी consider किया है, and also he has considered viscous forces, then modified equation दिया है. So this is modified equation. So in this case, only thing is the Reynolds number is lies between 0.2 and 5, whereas Stokes law is less than 0.2. ठीक है. Similarly, if it is the Reynolds number is lies between 5 and 1000, ठीक है, so then the value of this CD will be equal to 0.4 direct दिया है. ठीक है. Similarly, there is for 1000 Reynolds number lies between 1000 and 10 to the power of 5. तो इसके लिए कुछ डायग्राम्स है, विद डायग्राम मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से वीडियो देखो, हार्डली 20 मिनट का वीडियो रहता है, तो आप ध्यान से उस वीडियो को देखो, समझने के लिए कोशिश करो. क्लियर है. सो होप आपको ये समझ में आया. नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू विद Reynolds number between 1000 and 10 to the power of 5. And also there is a term called as terminal viscosity velocity, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन ड्रैग ऑन स्फीयर. ठीक है. होप आपको ये क्लास समझ में आया. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. हैव ए नाइस डे.